हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का डेथ स्ट्रैंडिंग के एक नए एपिसोड में। एक बार के लिए मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। तो ये डेथ स्ट्रैंडिंग का अपना एपिसोड 30 चल रहा है और जिसके अंदर हमें इसको ढूंढना था, एमिली को, जो हमें मिल चुकी है। और कल की जो लाइव स्ट्रीम थी ना, उसके अंदर प्रॉब्लम ये हुई थी कि बीच में यार लाइट कट हो गई थी, तो जिसकी वजह से गेम यहीं पे रुक गया था। चलिए कोई बात नहीं, आज हम कंटिन्यू करते हैं एंड देखते हैं आगे क्या होता है। चलो इसके पास चलते हैं। Here वाह, for you. Always. Like you were for me. भाई मेरे पास यही ऑप्शन था यार, और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। अगर हम इसको मारते ना तो गड़बड़ हो जाती, और गड़बड़ क्या होती, बेसिकली ये सब कुछ तबाह कर देती। पीछे का फ्लैशबैक चलाया इन्होंने फिर से। क्या ये सीन तो आ चुका है एक बार, अब दोबारा देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. When you're all grown up, you'll need it to make us whole again. ओके, And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. Promise you'll remember. Sam, I'll be waiting for you on the beach. आ चुके हैं हम लोग बीच पे। I remember. You knew. You always knew. I did and I didn't. I had so many dreams of the future. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you and the others. But to connect the dots, to make sense of everything, you need perspective. You need time. अब क्या होगा आगे यार? Time has no meaning to me. I am not a line. I am a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares are your dreams. You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible. To live life one day at a time. Thank you, Sam. A gun won't help you here. But it still has a role to play. क्या? It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in. Come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. क्या मतलब? I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Why do you have to stay on the beach? Sam, I am the beach. Hmm? And I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of years. Alone? That's what an EE does. If I had just done my job, none of this would have happened. But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So, that's what I did. Sounds like hell.
You and the others came together, connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. Before each of the Big Five, life rebelled. They fought back, evolved in order to survive. The extinction isn't just an ending. It's an opportunity. And if I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it. Even if we aren't together, we will always be connected. Goodbye, Sam. तो क्या वो वापस चले जाएंगे? क्या मतलब? ओह, तो फाइनली ये हो ही गया। ये बच्चा कौन भाई? ये क्या है? डॉल है? सब कुछ एक सेकंड, ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों हो रखा है? A gun won't help you here, but it still has a role to play. ओके भाई, अब क्या करना है? स्टॉप द एक्सटेंशन बैक। ओके, ये तो चलो ठीक है। अब क्या करना है? नॉर्मन रिडिश, मैट्स निकलसन। क्या मतलब, गेम पूरा हो गया? ली सिडॉक्स, एक सेकंड, हम बीच पे कैद हो गए क्या हम लोग? मार्गरेट क्वेली, क्या सच में ये गेम पूरा हो गया? यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अगर मैं इधर जाऊं तो क्या है? चेक करते हैं। यार मुझे लग रहा है कि गेम पूरा हो गया शायद ये, क्योंकि यार ये तो कोई एंडिंग नहीं थी यार गेम की। और क्या हम हमेशा के लिए यहाँ पे कैद हो गए? डैरेन जैकब, एमिली ओबेरॉय। एक सेकंड, मैं उधर जाके देखूँ तो क्या है? चेक करते हैं ज़रा क्या है इधर। फिर से यहीं पे। Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. The truth is, those weren't your dreams. They were mine. ओह,
For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours too. In my dreams, I watch the world. भाई यहाँ पे हो क्या रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again and again and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. क्या स्टैंड अप फिर से हिडियो कोजिमा. एक बार के लिए मुझे गेम ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन अब तो मुझे ऐसा ही लग रहा है. एक सेकंड वहाँ चले गया देखते हैं वहाँ पे क्या है. लेट्स गो. और ये जगह कौन सी है. ये बीच है बेसिकली इतना तो पता है हमें. काइल कूपर टाइटल डिजाइनर. योजी सिनकावा करेक्टर एंड मैकेनिकल डिजाइन. फिर से क्या हम इससे आगे नहीं जा सकते. भाई कहाँ गए हो. जगह चेंज हो गई है तो. कि फिर से यही आके बैठ गया. आई थिंक हम इसको पास नहीं कर सकते अब हमें. ये क्या है. The first operation. I was only 20. I opened my eyes and found myself on the beach. ये अपनी स्टोरी बता रही है. But the moment I came round, I was back in the hospital bed. I was split across two worlds. Bridget, my Ha in that one. Amelie, my Ka in this. Somehow, the two of us managed to coexist. Soon, our ages began to diverge. Only Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. A daughter with a debilitating condition and an absent father. Look. Amelie. Is French for soul. A soul that's a lie. There was no Amelie. Only me and the beach. I thought it was a curse in the beginning. But later, I started thinking, maybe I can use this. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach had to be the key to interpreting the visions of the future. चलो भाई उठ जा. भाई ऐसे धीरे धीरे क्यों कटछिन दे रहे हो तुम लोग. मेरे को उधर जाना है.
पहुंच जाएंगे क्या आप? लेट्स ट्राई। ओके स्टैंड अप। यार फिर से बीच के पास आए जा रहे हैं। मतलब क्रॉस नहीं कर सकते? इधर जाएं तो इसमें फाइनल बॉस कौन था भाई? फाइनल बॉस फाइटिंग नहीं हुई इस गेम में? I realized the beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived. 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the chiral network as quickly as possible. The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So I started researching bridge babies, children bound to the world of the dead. तो ये सब इसका किया धरा था। What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. I founded bridges, more determined than ever to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. My Ha had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my Ha was gone. I couldn't finish what I'd started. So, I asked you to do it for me, and you did. You helped us complete the network, helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve, like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have canceled itself out, leaving nothing. But somehow a tiny speck of matter survived. Just enough. Enough to make this world and everything in it. A world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser.
inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity. अच्छा जी, अब क्या करना है? फिर से कोई कटसीन आएगा क्या? हीडियो ससस्की आई थिंक वी कांट पास. चलो देखते हैं. फिर से वही आ गया क्या? भाई हम यहाँ पे कैद हो गए हैं शायद. बस घूमते रहो, इसमें कुछ और होगा भी आगे. इस तरीके से तो एंडिंग मैंने किसी गेम की नहीं देखी. I pulled the trigger twice that day. अब वाइट कपड़ों में आ गई. Once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. There you are. You want to go home? Let's go home. I wanted to set you free from death once and for all. It's okay. I know the way. But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. I just wanted to save you. I am an extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. But that moment, you became part of that fate. You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. Not long after, the Death Stranding occurred. The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options,
I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. You can cut me off. An EE doesn't have that option for itself. But in my nightmares, I saw another future. One that you chose. One where extinction is hope against total annihilation. फिर से यही चलता रहेगा क्या आगे? ओके, गेम पूरा हो गया भाई. भाई गेम पूरा हो गया है यार. कोई बोनस सीन वगैरह इसमें कुछ है या नहीं है? ये क्या बकवास एंडिंग थी यार इस गेम की. Soon I'll come around. Lost and never found. Waiting for my words. Seen but never heard. Buried underground. But I'll keep coming. ओह माय गॉड यार, ज़्यादा कुछ खास लगी नहीं मुझे इसकी एंडिंग यार. इस गेम की एंडिंग तो मुझे बहुत घटिया लगी. लास्ट में कोई फाइट वाइट देते कोई बढ़िया वाली, कुछ नहीं दिया इन लोगों ने तो. Make you heart proud. Soon I'll come around. Lost and never found. Waiting for my words. Seen but never heard. Buried underground. But I'll keep coming. Yeah, I'll keep coming. Yeah, I'll keep coming.
कोई इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन वगैरह कुछ है क्या? क्रेडिट सीन है क्या इस गेम के अंदर कुछ, या नहीं है? आई थिंक नहीं है। ओके, कुछ एक सीन आया तो है। गन इसको कहाँ से मिल गई फिर से? अच्छा, इसको वो उसने दी थी। A gun won't help you here. But it still has a role to play. क्या? ओह! सच में शूट कर लिया खुद को उसने। F2 reconnect with living। कुछ नहीं हुआ, खाली है गन ये। Listen, Sam. I was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. You were never abandoned. And you're not alone. Don't you see, Sam? You have to live. क्या करें, ऐसे कौन जिएगा भाई? आवाज तो आ रही है लेकिन आ कहाँ से रही है? ये क्या है? कहाँ? वो क्या है भाई आगे? I see him. This way. My God. He's over there. Over here, Sam. Dead man. We're coming, Sam. You ready for a job? Ready. Sam, I see him. Okay. Lou, take me to Sam. ओह, भाई इसमें क्रेडिट। Don't give up. You're still connected. क्रेडिट सीन आने के बाद में भी गेम के अंदर है कुछ। Gotcha. ओह, डेड मैन। कहाँ से? ओ भाई, इसका चेहरा भी ऐसा ही हो चुका है।
गेम और है क्या आगे? ओके, गेम है कुछ और आगे गेम के अंदर. For too long have we lived as strangers to one another, divided by walls built to keep us safe. But now, with the completion of the Cairo network, we may at last move forward as a people united. Today we come together to celebrate the birth of a new nation. A new nation for a new world. The United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. Let there be a new America. An America where we can face one another, where we can speak our minds and open our hearts. The old ways die hard, but I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past. An enduring shadow, a constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament, not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together, to the bonds between us, to our collective greatness. All things must come to an end, ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the Cairo network and in our hearts. We will always remain connected. There is another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. The name is unimportant. But you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Now, wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes,
What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately, It didn't work. yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you Camarito, into the hello, great hello, beyond, brother. or sent you to some other beach. We were क्या हाल really चाल है racking our आपके? brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated यार aging. ऐसे गेम की एंडिंग मैंने पहली बार देखी है, मतलब इसमें क्रेडिट सीन प्ले हो गए, In the ठीक है, एंड में this is what led us उसके to बाद में भी गेम में कुछ है, Just when we गेम were चल रहा about है. to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. So we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Locknow via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent अब क्या बाकी MDE. रह गया गेम के अंदर? सब कुछ तो हो The गया. plan was for Credit Fragile to, scene आ in गया. essence, ठीक है, slingshot सब Lou कुछ हो and me गया. to your position so we could rescue you. आज It's मैंने not so अपना easy कंसेप्ट to आर्ट send कर multiple लिया, बहुत individuals बढ़िया. to another 3D person's बना beach रहा हूँ for an उनके. extended period of time. बढ़िया भाई. And concept art, that's where the umbilical cord came in. जिसके बारे में बात कर रहे थे उसी के बारे में, या From फिर President अपना जो Strand's गेम है उसके DNA. बारे में बता रहे हो आप? They serve as a single knot that binds us all. The president must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Amelie. She said it had another purpose. ऐसे Not a गेम की weapon. एंडिंग कौन करता है यार? ना Not a कोई बॉस lifeline. फाइट, ना A कोई stick that became a कुछ rope. और, बस सिंपल I ऐसे suppose ही that's one कर way दिया of इन लोगों putting ने it. एंड गेम का. Oh, Sam. ओह मोटे. No idea how long I've been waiting to give you a hug. Got something else to tell you. Top secret. क्या? It's about Cliff. BB's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common law wife. Lisa Bridges. Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. चलो मैं Likely देख that, लेता by हूँ all आपका. accounts, later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. Turns out some people die harder than others, though. बढ़िया है यार. Dear John donned a mask and reappeared with a new कंसेप्ट आर्ट identity. तो बढ़िया. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The president's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him. But I'll work with him if that's what it takes. मैं हटा दूंगा बाद We'll talk में, later. बट उसको किसी के लिए बना रहा. ओके, कोई बात नहीं यार. वैसे कंसेप्ट आर्ट अच्छा है. यार इस गेम के अंदर मतलब Sam. ऐसी एंडिंग कौन करता है गेम की यार? I don't expect you to forgive me. देख लिया. हाँ भाई देख Would you लिया hear मैंने. me अच्छा out? है. I killed Captain Clifford Unger. क्या? तूने मारा था उसे? I would tell you I did it for America. For love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything. Now, I'm not trying to make excuses.
I just want you to know. एनिमेशन बना Better रखा days है gone by लेकिन when I ये haven't thought about टीम it. वर्क है। ओके भाई कोई बात नहीं, Time didn't help. भेज देना मुझे, देख Or the लूंगा मैं mask. कैसा क्या है। Please, let me finish. The captain, saved my life. You know why they call me Die Hardman. Because he wouldn't let me die. He brought my sorry ass back home इंटरव्यू टाइम पे every दिखाऊंगा, time. कोई बात नहीं भाई, उस टाइम पे दिखा देना, बढ़िया। वैसे उस टाइम पे बता दो तो। And I loved him as much as I loved her. And when he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. अबे यार तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। He saw I was trying to do my part for America. He remembered who he was. And he forgave me. God! But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. God! No. भाई लड़की का प्यार कुछ भी करवा सकता है आपसे। मेरे को तो मजा आ रहा है अपना कैरेक्टर डिजाइन करते हुए। सही है भाई, अपने काम से प्यार करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। But maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. क्या लाइन बोली यार इसने कि अगर आपको मरने से डर नहीं लगता तो आप लाइफ की वैल्यू क्या करोगे? If we're gonna come together and build a better America. बट आप लोगों का फिक्स नहीं हुआ स्टोरी यार देखो, मेन स्टोरी यही रहेगी, इसमें छोटा सा चेंजेस हो सकता है। जैसे मेन स्टोरी अपनी यही रहने वाली है, इसमें नाम वाम कुछ चेंजेस होंगे और कुछ छोटा मोटा बदलाव होगा, बाकी बेस जो है ना मेन गेम की जो मेन स्टोरी है वो ये रहने वाली है। मेन स्टोरी यही रहने वाली है, कैरेक्टर के नाम चेंज हो जाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा। अभी तो हमने वो भी तो नहीं बनाई ना डायलॉग डिलीवरी, कौन से कैरेक्टर से कहाँ पे क्या करवाना है, मेन स्टोरी बनाई है ना अभी इसको इसी स्टोरी से हम बहुत बड़ा गेम भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं गेम को। Hey Sam, been waiting for you. Lou? Dead? आप 3D आर्टिस्ट Poor हायर thing was never truly alive. कर रहे Not in this world. at एक्चुअली least. क्या है कि यार हमारा बजट नहीं है अभी 3D The आर्टिस्ट हायर decommissioning करने order का, ये प्रॉब्लम finally है, came through. बजट की प्रॉब्लम है Can't यार, risk necrosis. The body इसीलिए can't stay here.
अभी हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे गेम बना रहे हैं, I thought तो you might उससे want जो to take care रेवेन्यू of it. आएगा उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। You could try taking Lou out of the pod just अब to see what happens. ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट को लेके ड्रीम तो मेरे काफ़ी That हैं। would be in direct contravention इस of प्रोजेक्ट executive को order. मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूँ कि छोटे गेम से थोड़ा रेवेन्यू आ जाए और उसके And बाद में there are कितना laws बजट रखे हो। about that kind of भाई thing. बजट कोई फिक्स नहीं है यार, Now that मतलब we're a कि nation. कोई फिक्सिंग नहीं की है बजट की। जितने पैसे आते हैं हम लगा देते हैं, जितने पैसे आएंगे लगा देंगे। just अगर couldn't bring पैसे कम myself पड़ेंगे तो to डिले कर देंगे। बाकी फाइनल प्रोडक्ट बग्स के साथ में रिलीज नहीं करना, फाइनल प्रोडक्ट को हम But परफेक्ट if the बनाना है। alternative is defying the president, तो अभी कोई फिक्स बजट नहीं है, जितने I पैसे can't do that आएंगे either. धीरे धीरे आते जाएंगे, आगे ऐसे प्रोग्रेस बढ़ती Not जाएगी me. गेम की। All right. अगर बजट ही अब हमारा बढ़िया अच्छा चल खासा रहा है। होता तो भाई हमें फिर गेम, अब तक गेम आ चुका होता हमारा, मतलब आ तो नहीं चुका होता लेकिन अब तक प्रोडक्शन में जा चुका होता, बन रहा होता गेम अभी। before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your हाँ, cufflinks अच्छा होगा कि offline. हम लोग बात कर In लेते that कल state, एंड there'd be nothing to इफ आई stop लाइक you द from प्रोजेक्ट आई removing वर्क them. विद यू। ओके, कल मैं If you आपको did, वीडियो कॉल करूँगा, the उस पर UCA बात कर wouldn't लेंगे know where you कि were or how to find you. कैसे काम करेंगे हम। You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. मेन प्रॉब्लम यार हमारा trust बजट you'll का ही है remember और what कोई I वो said. नहीं है। अगर बजट अच्छा खासा होता तो भाई आर्टिस्ट भी मिल जाते हैं, absolutely. सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, लेकिन इतना बजट है नहीं कि हम 3D आर्टिस्ट हायर करें और उसको मंथली सैलरी दे सकें। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारी जो टीम है वो छोटे छोटे गेम बनाते हैं, हम अभी बना रहे हैं। अभी तो स्टार्ट ही किया हमने गेमिंग पे, सैलरी वगैरह भी उस टाइम पे देख लेंगे। हाँ, वीडियो कॉल पे सारी बात कर लेंगे, कैसे क्या पे करना है आपको और कैसे क्या काम करना है वो उस टाइम पे देख लेंगे। कल मैं आपको वीडियो कॉल करूँगा आपको मैं, तो उस टाइम पे हम बातचीत कर लेंगे अच्छे से। और फ्यूचर क्या होने वाला है वो भी बता दूंगा, हमारा विज़न क्या है बेसिकली इसको लेकर के मैं आपको सारी डिटेल समझा दूंगा, पास्ट एंड अभी क्या चल रहा है और आगे हम क्या करने वाले हैं। मैं फ्री हो तो देख लेता, हाँ कोई बात नहीं। How's the weather? कल Don't think बात you'll be करता हूँ needing an आपसे umbrella. वीडियो कॉल पे। I decided to follow my father's dream after all. इस गेम में पोस्ट Don't क्रेडिट worry. सीन चल रहा है। I won't get mixed up with any terrorists this time. पोस्ट क्रेडिट सीन भी नहीं बोल सकते You इसे, see, he's got ये my बेसिकली We're the first private कुछ delivery company to get the सीक्रेट official रिवील हो रहे approval. हैं। गेम Sounds पूरा like हो you चुका है, moved up in the क्रेडिट world. सीन आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी गेम चल रहा है आगे। Congratulations. Thanks. ऐसी एंडिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं की Wait. थी इस गेम से। There's something I have to tell you. सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट I didn't ओवर हुआ shoot है, मैं kids. फ्री हूँ, सोच रहा हूँ Couldn't आपके pull the संग ही trigger. कर लेता। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। So I let him choose. Death or eternal solitude on the beach. कल मैं आपको Fair enough. डिटेल में बताता हूँ, बेसिकली You मैं never टीम did से भी like बात कर breaking लूँगा things. मैं थोड़ा सा और, That's right. I क्योंकि finally fixed what's broken. हम 2 पार्टनर हैं वैसे तो, लेकिन And we टीम can- वैसे कमीशन पे 1-2 बंदे हो रहे हैं हमारे पास में, तो मतलब यूँ समझो I'm 4-5 बंदों की टीम है हमारी, 5 लोग हैं हम लोग। fragile. और मेरे अलावा सभी Wanna come बिगिनर्स work for हैं, me? मैंने तो फिर भी काम किया है, Could use a man like you. बाकी सारे बिगिनर्स ही हैं। The world's still थोड़ा broken. बहुत एक्सपीरियंस नहीं है उनको, Same वैसे as आता है before. काम, बट एक्सपीरियंस नहीं है उनको। What isn't? But we're still here. तो उनसे मैं कल डिस्कस कर We're लेता हूँ, still डिस्कस करके chugging बाद along. में आपसे मैं वीडियो कॉल करूँगा, Not आपको everyone. मैसेज कर दूंगा आपको मैं कब फ्री Not हूँ, me. फिर हम बात करेंगे कि Come आप on. You put America कैसे back काम करोगे together. हमारे साथ, Didn't you? कमीशन पे करोगे या फिर Doesn't प्रोजेक्ट mean में there's a place for me. प्रोजेक्ट में रहोगे no या ties to फिर anyone or anything. सैलरी पे रहोगे, कैसे रहोगे। I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. बाकी आप प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहो तो प्रोजेक्ट का I still हिस्सा do. भी बन सकते हैं, बट मैं आप Don't कभी act कंफर्म like नहीं you're बता the same सकता person. आपको, अभी थोड़ा You've learned how to टीम से touch. डिस्कशन कर लेता हूँ मैं to एक बार, feel. कल मॉर्निंग में जाकर के ऑफिस। You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose.
Sam! यार क्या बात है, ऐसे क्योट्स कौन बोलता है भाई? जिसको भी मैंने छुआ उसको मैंने खो दिया। क्या बात है सैम ब्रिजेस, पूरे गेम के अंदर तो तू चुपचाप था। एंड लू, Come on, Lou. One last delivery. क्या करना है अभी? हमें कुछ करना है क्या? एपिसोड 14 स्टार्ट हो गया भाई। टीम के संग बात कर लो। हाँ कल कर लेता हूँ। यार ये कैसे हो सकता है भाई? मुझे तो लगा गेम खत्म हो गया। क्रेडिट सीन आ गए, सारा काम हो चुका है, एंड स्क्रीन आ चुकी है, फिर भी गेम के अंदर एपिसोड 14 स्टार्ट हुआ। कैसे? अभी भी क्रेडिट सीन दे रहे हैं लोग। उस टाइम पे तो प्रॉपर क्रेडिट सीन चली थी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। मुझे लगा गेम ख़त्म हो गया है, फिर मैंने सोचा शायद कोई पोस्ट क्रेडिट सीन होगा, वो देख लेते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने तो नया एपिसोड चालू कर दिया। वन लास्ट डिलीवरी। कहाँ जाना है अपने को? आ, अच्छा वहाँ जाना है क्या? म्यूजिक तो बड़ा मस्त है यार। वाह यार, व्हाट ए म्यूजिक। ये एक आइसोलेशन वाल यही है।
ओके लेट्स गो, पहुंच गए हम यहाँ पे। ये लास्ट डिलीवरी है अपनी। लॉक, यहाँ पे नहीं आना था क्या? तो कहाँ जाना था अपने को? मैप कहाँ है? मैप नहीं खोल सकते क्या हम लोग? आइसोलेशन वार्ड है कहाँ पे? मेरे को याद ही नहीं है यार वो। वो तो नहीं है यार। मैप काम नहीं कर रहा। अच्छा इसने हाथ से वो निकाल दिया। वेयर इज़ द आइसोलेशन वार्ड? मैं एक मिनट चेक करता हूँ। कहाँ पे मिलेगा ये? गाइड चेक करनी पड़ेगी क्या मुझे? चेक कर लेता हूँ एक बार ज़रा मैं गाइड, इसमें शायद कुछ हो यहाँ पे। मुझे कोई आइडिया नहीं है यार कहाँ पे है। वेस्ट ऑफ कैपिटल नॉट सिटी। हाँ वे यार, इसमें मैप पे भी नज़र भी तो नहीं आ रहा। एक सेकंड गाइज, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ इसमें। एक सेकंड, यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके तब तक ये इंक्रीज़ हो जाता है।
तो ये है आइसोलेशन वार्ड। मैं ज़रा चलो भाई, स्टैंड अप। All right, feeling good. आराम से। चलो 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 चलो। यार मैप भी तो काम नहीं कर रहा ना यहाँ पे। यार कहाँ पे जाना पड़ेगा अब यार? आइसोलेशन वार्ड मिलेगा कहाँ पे? मैं शुरू से स्टार्ट करूँ क्या? एक सेकंड, मैं सिस्टम में लोड करता हूँ। ओके नहीं यार, ये नहीं। आई थिंक यहाँ से शुरू होगा। चलो अभी देखते हैं कहाँ पे है, मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके वहाँ पे जाना है अपने को। वहाँ पे है। वो है सामने, शायद वही है। आई थिंक वही है। इस गेम की एंडिंग है यार, सच में बहुत अलग है। ऐसी एंडिंग मैंने किसी गेम की नहीं देखी। यार म्यूजिक तो बड़ा मस्त बजा है। वैसे जो लोग भी देख रहे हैं, मैं बता दूं गेम ख़त्म हो चुका है। ये पोस्ट क्रेडिट सीन चल रहा है।
गेम ख़त्म होने के बाद का सीन है। तो जिन लोगों ने एंडिंग मिस कर दी भाई वो पीछे जाके देख सकता है कि एंड में क्या हुआ था इस गेम में। लेकिन अभी भी भाई बहुत, शायद मेरे को लगता है कुछ हिस्सा बाकी है गेम का, थोड़ा सा बाकी है, वो अभी पूरा कर देंगे। आज ये पूरा हो ही जाएगा ये गेम। मेरे को म्यूजिक पसंद आ गया यार। ये गेम खेलने के बाद में यूट्यूब पे जाकर के सुनूंगा इस म्यूजिक को। ये है आइसोलेशन वार्ड जो सामने नज़र आ रहा है, वहाँ पे लेके जाना है अपने को इस बच्चे को। वहाँ पे होगा क्या मुझे कोई आइडिया नहीं है। आखिरी काम यही बचा है इस गेम के अंदर। भाई इस गेम ने है ना एक चीज़ मेरे को सिखा दी है कि जिसको आप सीधा साधा समझते हो ना वो निकलता नहीं है। बहुत कम लोग निकलते हैं। मतलब पूरे गेम के अंदर हम जिसे अपना समझ रहे थे वो अपना निकला ही नहीं। हमको लगता था कि ये इंसान अपना साथ दे रहा है, लास्ट में वही विलन निकला इस गेम के अंदर। इतने ट्विस्ट पे ट्विस्ट आए इस गेम के अंदर, बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले। ट्विस्ट तो बहुत ज़्यादा थे। जिस पे शक था वो इंसान सही निकला, और जिसे हम मेन विलेन समझ रहे थे वो मेन विलेन निकला ही नहीं। और जिसे हम बचा रहे थे इतनी देर से वही मेन विलेन निकला। ओके भाई, कट सीन स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सी। ये है हमारा बच्चा, लू नाम है इसका। अब यहाँ पे क्या होगा? अरे एक बार बात तो कर ले यार। Was never truly alive. Not in this world, at least. कनेक्ट कर इसे जरा एक बार, क्या होता है? Thanks for everything. ओके, मेमोरी तो सिंक हुई है। क्या हुआ है? दिस चाइल्ड स्पेशल। A baby candidate. Either that or A sacrifice. कैमरेटो। सो कल आप टीम दोनों रहेगा? हाँ, टीम भी रहेगी, मैं भी रहूँगा। a bridge. Brought you an astronaut. तो ये है इसका असली फादर इस बच्चे का। Mankind can go anywhere, even outer space. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm going to take you wherever you want to go. ये आ गया, डाई हार्ड मैन। यही था ना? यही था। Can I help you? Holy shit. John, is that you? Captain,
What are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The void out. इस एक्टर का नाम भूल गया यार मैं ये हॉलीवुड मूवीज में आता है ये लड़के वाला पापा हाँ ये वाला ये इस एक्टर का नाम क्या है मैं भूल गया इसका ये काफ़ी मूवीज में दिख चुका है I'm so sorry. I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. ये एमिली है Lies are an unfortunate necessity. अब पता चलेगा यहाँ पे हुआ क्या था इतनी देर The से जो president नजर आया था। gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 minutes to talk. Off the record. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. You were my commanding officer, but I swore an oath to the president to protect her and the country at all costs. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then, I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. I wrote down everything you need to know. It was the only way to keep it off the system. Burn it when you're done. The rest is up to you, sir. तो इसको लेके जाएगा ये क्या लगता है ऑफ कोर्स जाएगा I believe this belongs to you, sir. Now, I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option.
An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes, tops. Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get. क्या होगा भाई अब? इससे तो पता है मुझे पास्ट की स्टोरी चल रही है, बट एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था? Lisa. Don't worry. I'll take care of him. I promise you. Promise you. My animal, Lisa. Sorry. क्या? सच में? Bibi. Bibi. Bibi, can you hear me? Can you hear me? It's Daddy. तो ये हुआ था वहाँ पे। चलो पता चल गई हमें मेमोरी। क्या करें, अंदर चले? टर्मिनेट बीबी। I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. ओके
कंप्लीट। A purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. दोबारा से मेमोरी सिंक। ओह, ऐसे मेमोरी सिंक हो रही है क्या? चलो इधर चलते हैं। इधर तो कुछ भी नहीं है। Nothing here. हाँ, हो क्या रहा है भाई ये इस गेम के अंदर? यहाँ पे अभी अच्छा मैनुअली मेमोरी सिंक कर रहे हैं क्या हम यहाँ पे? और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक वहीं पे होगा। चलो चल के देखते हैं, आगे नीचे हो जा। यहाँ पे कुछ है, पहले इधर चलते हैं। ओके, अगर उधर चले तो नहीं जा सकते क्या? नहीं जा सकते। इधर क्या है तो? नथिंग हियर। हो क्या रहा है यहाँ पे? नथिंग। ओके, यहाँ पे कुछ है। अरे यहाँ पे भी नहीं। भाई साहब, क्या करना होगा? फोन आ रहा है बीच में। ओके, कट कर देता हूँ मैं। ओके, यहीं पे आना था बस। इधर तो हम ऐसे घूम रहे थे। मेमोरी सिंक फिर से स्टार्ट हो चुकी है। बंद है।
भी बंद है। ओह, चल गया पता। Freeze! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off. Back off! Get up! Oh. Don't do it! I'll handle this. I'm sorry, Captain. Don't! You got it! You two! Stay there! And hold your fire! Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here. I'm sorry, Lisa. I screwed it up. I've ruined everything. This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You saw him all. Now check the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up. He's inside. Move, dumbass. BB. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. See the sunset, the day is ending. Let that yawn out
There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you till the morning. ओह, ये हुआ था यहाँ पे, ऐसे मार दिया था इसे। When I found out I was gonna be a father, I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom, no matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain, look at you. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my God. बच्चा कहाँ गया? ओह, Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. आप कोई एनिमेशन ऑनलाइन देखते हो जिसका कोई Let it go. suggestion मिले? यार मैं एनिमेशन देखता नहीं हूँ यार ज़्यादा। Please! Shoot him. I gave you an order. एनिमे मैंने Shoot देखी him. नहीं है ज़्यादा। You told me your name was Sam Porter. क्या? ये कैसे हुआ? But you're Sam Bridges. My son. My bridge to the future. Without you, I was just like any other Cliff. Dead end. CGI बोल रहा हूँ। No way forward. नहीं यार, ये सब नहीं देखी है मैंने। मूवीज़ देखता हूँ सिर्फ मैं। But an obstacle मूवीज़ तो मैं देखता रहता हूँ, बहुत मूवी देखी है मैंने। looking on at the world people like you were trying to build. Dividing people was the only thing I was ever good at. But not you, Sam. You bring people together.
that bridge to the future. And mine. Come on, Sam. Stand up. ओह, This is me. ऐसे मिल गया बच्चा। मार दो सही है, कुछ नहीं होने वाला। हाँ? Oh, God. Not BB, too. No, 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 no! आपके टीम में कोई सीजीआई में वर्क किया है? नहीं, किसी ने नहीं किया यार। सीजीआई में तो किसी ने काम नहीं किया अभी तक। मेरा एक दोस्त है, वो काम करता है इधर जयपुर में। जैसा मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, आप भेज दो, मैं देख लूँगा। देखता हूँ मैं थोड़ी देर में। हाँ, मैं देखता हूँ अभी। ये क्या है यार, इस गेम का एंड है, तो मैं सोच रहा हूँ कल पे ना छोड़ो, आज इसका एंड कर दो। मतलब एंड तो हो चुका है वैसे, लेकिन ये कुछ कट सीन्स वगैरह चल रहे हैं इस गेम के अंदर। You wanna go home? Let's go home. It's okay. I know the way.
लगता है ऐसे You किया था इसने। understand, his days as a BB are over. Now that his connection to the other side has been severed. It was me who cut the cord. So yes. A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission him? In a manner of speaking. Take him out of the pod. I'll raise him as my own. क्या क्या इसने बाहर निकाल लिया? ओ, इसको जला दिया इसने और बाहर निकाल लिया बच्चे को। Come on, Lou. Wake up. Come on, Lou, wake up. Come on, Lou. Come on, baby. Come on, Lou, wake up. Wake up. Come on. Wake up! Wake up. क्या वो मर गए? नहीं यार। हाँ, जिंदा है। Lou. हाँ। हो, अब जाके गेम खत्म हुआ है। चलो भाई, फाइनली गेम पूरा तो हुआ। Every time we touch it shows. Worn out. Worn out. I sense you like a broken window. The lack of something makes a sound.
Let's make a toast to the damned, waiting for tomorrow when we're played out by the band, drowning out our sorrows. What will become of us now at the end of time? We'll be fine, you and I. Let's draw a line in the sand, keep it straight and narrow. We had it all in our hands. We begged and then we borrowed. What will become of us all at the end of love? When we stopped looking up, you can tell
You'll be happy to hear your vitals have stabilized, and that you're well on your way to recovery. Not that it's your fault, but what I wouldn't give to trade places. We're all stuck in the president's office, working, but at least one of us is still free as a bird. You should head out, make the most of it. Could even do some orders if you wanted.